हेलो कुरामा, गुड मॉर्निंग। टेक्निकली आफ्टरनून है बट फिर भी गुड मॉर्निंग। एंड वन मोर अपडेट, डार्क बी ठीक हो गया। डार्क बी के लिए काशी ने एक मेरे को बैटरी दिया एंड मैंने वही डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर द बैटरी काशी, थैंक यू। एंड बिस्मिल्लाह। First and foremost, hello, namaste, assalamu alaikum. I'm Nihal Amir and welcome back to Savage Bike Warriors YouTube channel. पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि I have an issue with my Kawasaki Z900 एंड कुरामा का थोड़ा बहुत मेरे को ट्रबल हो रहा था। उसका कुछ नॉइज़ आ रहा था इंजन का एंड आई वॉज़ नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू विथ इट। तो मैंने मेरे वीडियो पे पोस्ट किया कि मैंने बोला था कि मेरे को कोई सी और का गाड़ी देखना पड़ेगा कि इफ़ दे आर हैविंग द सेम नॉइज़ एंड इफ़ इट्स नॉट द सेम देन मेरे को कुछ और स्टेप्स लेना पड़ेगा। एंड सो एक पर्सन है जिन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया एंड ही गॉट इन टच विथ मी एंड ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ द सेम मॉडल ऑफ Kawasaki Z900 एंड ही टोल्ड मी वी कैन मीट अप। सो इतने दिनों से बैंगलोर में बारिश पड़ रहा था एंड आई हैडंट गॉटन द टाइम ऑल्सो, उनको भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो लकीली आज टाइम मिला एंड आई हैव कम टू सी दैट पर्सन। एंड द फनी कोइंसिडेंस, ये राइट वाला जो घर है बहुत साल पहले वी यूज्ड टू स्टे हियर एंड दिस इज़ लाइक ब्रिंगिंग बैक हेल लॉट्स ऑफ मेमोरीज टू मी। बचपन से यहीं पे पले बड़े। I can't believe such a big coincidence it would be here. And I think we are almost here. Assalamualaikum. खैरियत है? Thank you so much. No problem. Yeah, I was just taking your videos. Right? Really? Videos, man. Thank you. You don't mind being on camera, right? Yes, absolutely. This is Zubair and he's helping me out. Thank you so very much, Zubair. Yeah. The problem is when I actually park the vehicle, I need to do the wheel spin and park it here. The same thing in my parking also. I have to do a proper burnout and I have to put it inside. You have never noticed that sound in your engine, is it? Big sir, I mean, is the RPM very low on your bike when you start? नहीं स्टार्टिंग में कैसा रहता है मालूम? as soon as you start it will give a light crackle like टक 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 बोल के आता है. when I hold the clutch it dies. Okay, let's take. हाँ I hope it's in a way I hope it's the same thing. Yeah. I have a same bedsheet on my RS200 also. Because they say, you know, when you keep the this kind of cotton bedsheet, right? These things, the corrosion and all. I just put that. हाँ we'll start it. Bismillah. I already checked out Zubair's bike and his bike has the same sound as mine. So in a way it's a satisfaction कि I was really petrified actually, to be very honest I was kind of petrified कि is it a issue in my bike, क्योंकि in the beginning what happened when I took my bike for the first service, no, my fork used to jump a lot. थोड़ा if I go in a खड्डा ऐसे हिलता था fork मेरा. Then they adjusted rear suspension, आगे का preload, everything they adjusted. So it was a big hassle for me. And he's got so many accessories on his bike. Kurama looks stock as hell. Apart from the protection thing, everything. He's got winglets. He's got puke protectors. The grill was RNG, huh? Evotech. Evotech. He's got a radiator protector from Evotech. What are your plans on the exhaust, bro? At the moment,
I'm actually thinking of Austin racing. Okay. But again, it's Austin racing is very short, too loud, no DB killer. Correct, that's the thing. I'm telling from experience, without a DB killer, do not run an exhaust. Yeah, and you know, especially in Bangalore, the cops are really strict and they make our life hell. Actually. See, one or the other day we will have to have a city ride. Sometimes for a joy ride, Allah na kare, that day we get caught. Riding our own bike, we'll be like wondering whether we are riding somebody Exactly, else's this is the biggest thing in Bangalore. And I felt the one good option was Arrow. Arrow is running a full system, but they're giving you a DB killer option. I feel it's good. I'll share the link. You have a look. Sure, sure. मेरे odometer में I didn't have a screen protector, and he said he has one extra and he is going to bring it. And I'm like, wow. I swear, bikers are like the next level people, man. Most of the people I've met, most of the great amazing people I've met is only because of biking, and alhamdulillah, I'm grateful for meeting all the people. Thank you so very much, and thank you again for meeting me and being such a good person. We'll meet up, okay? Inshallah. Breakfast rights. This weekend I won't be here. I have a project. This weekend. Coming week? Tomorrow we are going. Okay. Coming week we'll just plan it. Coming week we'll see that. Inshallah. I'll share the details of the group. Done. I'll give you an update. We'll meet up inshallah. Allah Hafiz, मिलते हैं. And he told me that he'll add me in his biker group. So most probably we'll be meeting up for rides and everything. नमाज का टाइम हो गया. It's already 2. जयनगर में 2:15 2:20 को नमाज हो जाता है. I think it's better if I fly off home. सीधा घर जाके कुरामा को रुका के छोटी गाड़ी लेके जाके नमाज़ पढ़ के आ जाता हूँ. वहाँ पे मस्जिद में नमाज इसके लिए गाड़ी के लिए पार्किंग नहीं मिलेगी. मिट्टी वाला पार्किंग होता है. अल्लाह ना करे गाड़ी गिर गया ना, इट बी अ ह्यूज ब्लंडर. द बिगेस्ट इशू इन कमिंग ऑन रोड लाइक दिस, जो दड़बुड़ करता है ना, पागल कर देता दिमाग को. एक चीज़ तो आज अच्छा हुआ, मेरे को रिलीफ मिल गया कि गाड़ी का साउंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. दूसरी बाइक्स में भी ऐसा ही आता है, तो आई एम क्वाइट कंटेंट विथ इट. मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि मेरे में प्रॉब्लम आ गया. लाइक सबका माइंडसेट वही होता है कि गाड़ी भी लिया है तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ऑब्वियसली एनीवन विल वरी. तो मेरे को बहुत टेंशन हो रहा था, एंड आई एम हैप्पी. सोचा बाद में लगा लूँगा. जैसे स्किन प्रोटेक्टर लगाते हैं वैसा ही है. इट्स वेरी सिंपल. वेट वाइप है, ड्राई वाइप है. पहले वेट वाइप से कर देते हैं. ओके. लेट्स क्लियर इट ऑफ विद द वेट वाइप फर्स्ट. Then comes a dry wipe. अरे निकल जा भाई. And then finally use the microfiber just in case there is dust. एंड यहाँ पे लिखा है प्लीज़ पील ऑफ दिस मास्क बिफोर एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टर एंड प्लीज़ पील ऑफ दिस मास्क आफ्टर एप्लीकेशन. तो इसको निकालते पहले. मोमेंट ऑफ ट्रूथ. दिस इज बबल फ्री ऑल्सो. क्रेजी मैन. लग गया ठीक से. गुड. And finally perfect. This looks great. गाड़ी ऑन करता हूँ.
ऐसे लग रहा है कि लगा ही नहीं है कुछ भी वहाँ पे. फ्लॉलेस मैन. Once again, a huge thumbs up to Zubair. Thank you so very much for this. Hopefully we'll meet up on rides one day. One day soon. Not one day, one day soon. Let's head out. नमाज का टाइम हो गया अभी. मिलते हैं. And this is the end of the video. Till then, मिलते हैं अगली बार. Take care. Ride safe. Bye bye folks. Allah Hafiz. And once again, Allah Hafiz. And if you like my content, please do like, comment, share and subscribe. थोड़ा बहुत motivation will take me a long way to make better content. Bye bye.